बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उमर बेग, कैसे हैं आप लोग? How are you, my people, my family? Today we are going to install Oracle FX 21.2 and ORDS 21.4 with database 12c release 2 pluggable in Windows 10 InshaAllah quickly। आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से Oracle FX 21.2 और ORDS 21.4 को database 12c release 2 प्लगेबल के साथ विंडोज 10 में इंस्टॉल किया जाता है जल्दी से। सो फर्स्ट वी विल क्रिएट फोल्डर इन सी ड्राइव विद द नेम 12cr2 अंडरस्कोर 21.2। हम सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे 12cr2 अंडरस्कोर 21.2 के नाम का, और उस फोल्डर के अंदर मजीद दो फोल्डर बनाएंगे DB और ORDS के नाम के। एंड अंडर दिस फोल्डर we further create two folders with the name DB and ORDS. Extract Oracle Database 12c Release 2. Extract करेंगे Oracle Database 12c Release 2 को। Extract ORDS 21.4 folder in ORDS folder which we have just created. So we do not need to copy and paste ORDS folder. अब हम ORDS 21.4 के फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करेंगे ORDS के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाया है। तो हमें ORDS के फोल्डर को कॉपी करके उसको चस्पा करना नहीं पड़ेगा। The downloadable link of ORDS 21.4 is available. However, we have already downloaded ORDS 21.4 का डाउनलोडेबल लिंक जो है वो मौजूद है, अलबत्ता हमने उसको पहले ही डाउनलोड कर लिया है। एक्सट्रैक्ट एपेक्स 21.2 in 12cr2 underscore 21.2 folder, so we do not need to copy and paste apex folder। अब हम apex 21.2 के फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करेंगे 12cr2 underscore 21.2 के फोल्डर के अंदर। तो हमें एपेक्स के फोल्डर को कॉपी करके उसको चस्पा करना नहीं पड़ेगा। The downloadable link of Apex 21.2 is available. However, we have already downloaded Apex 21.2 का डाउनलोडेबल लिंक जो है वो मौजूद है, अलबत्ता हम उसको पहले ही डाउनलोड कर चुके हैं। The Java version which we are using is Java 8 update 211। जो Java का वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो Java 8 update 211 है। Run database setup with administrator rights। डेटाबेस का सेटअप चलाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से। I do not wish to receive security updates, so I will uncheck this option and hit next button। मैं सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं लेना चाहता तो मैं इस ऑप्शन को अनचेक करूंगा और नेक्स्ट का बटन दबाऊंगा। ऑप्शन विल बी क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर अ डेटाबेस, हिट नेक्स्ट बटन। ऑप्शन क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर अ डेटाबेस रखा रहेगा, नेक्स्ट का बटन दबाएं। ऑप्शन विल बी डेस्कटॉप क्लास, हिट नेक्स्ट बटन। ऑप्शन डेस्कटॉप क्लास रहेगा, नेक्स्ट का बटन दबाएं। ऑप्शन विल बी यूज विंडोज बिल्ट इन अकाउंट, यू कैन यूज अदर ऑप्शन एज वेल, हिट नेक्स्ट बटन।
ऑप्शन यूज विंडोज बिल्टन अकाउंट का रहेगा, आप कोई दूसरा ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट का बटन दबाएं। नाउ डिफाइन ऑरिकल बेस टिल डीबी फोल्डर व्हाइल हिटिंग ब्राउज बटन। अब हम ऑरिकल बेस बताएंगे ब्राउज का बटन दबा के डीबी के फोल्डर तक। Define global database name, password, confirm password and pluggable database name from your choice and hit next button। global database name देंगे, password देंगे, confirm password देंगे, pluggable database का नाम देंगे अपनी मर्जी से और next का बटन दबाएंगे। hit install बटन, install का बटन दबा दें। Oracle Database 12C Release 2 has installed at close बटन। Oracle Database 12C Release 2 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। क्लोज का बटन दबा दें। Open command prompt and reach where Apex folder is available। command prompt खोलेंगे, वहां जाएंगे जहां Apex का फोल्डर मौजूद है। वहां जाने के बाद ये कमांड चलाएंगे। When we reach there, run this command। Now we will run this command। अब हम ये कमांड चलाएंगे। Connect with sysdba। कनेक्ट होंगे sysdba से and check SGA maximum size by running show parameter SGA command। If it is less than 3000 MB then we have to increase it। कनेक्ट होंगे sysdba से और SGA maximum size पता करेंगे। शो पैरामीटर एसजी की कमांड चला के अगर वो 3000 MB से कम होगा तो हम उसको बढ़ाएंगे। तो ये 3000 MB से कम है। इट इज लेस देन 3000 MB। Now we will check a pluggable database status whether it is in read write mode or not। अब हम प्लगेबल डेटाबेस का स्टेटस चेक करेंगे कि वो रीड राइट मोड में है या नहीं है। अगर वो रीड राइट मोड में होगा तो हम उसकी स्टेट को महफूज कर देंगे। इफ इट इज इन रीड राइट मोड देन वी विल सेव इट्स स्टेट। सो इट इज इन रीड राइट मोड। नाउ वी विल शट डाउन डेटाबेस बाय रनिंग शट इमीडिएट कमांड। हम डेटाबेस को बंद कर रहे हैं शट इमीडिएट की कमांड चला के।
Now we will check SG maximum size again in order to make sure that the changes we did as reflected or not. हम दोबारा SG maximum size पता करेंगे ताकि तसल्ली कर लें कि जो तब्दीली हमने की है वो हो चुकी है नहीं, तो जो तब्दीली हमने की है वो हो चुकी है. The changes we did as reflected. Now run show PDB as command. We run this command before every Apex script to make sure whether we connect with Pluggable Database or not. If we connect with a Pluggable Database, then we can run Apex script. If not, then we have to connect with Pluggable Database first and then run Apex script. While connecting with the Pluggable Database, we make sure that session altered appear. If not, then we have to connect with sysuser. Oracle Apex 21.2 as installed. Oracle Apex 21.2 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है. Now we will run this command. अब हम ये कमांड चलाएंगे. User will be admin. Provide email and password from your choice. User जो है वो admin रहेगा. Email और password आप अपनी मर्जी से दे दें. Now we will run this command. अब हम ये कमांड चलाएंगे. Now we will run this command. अब हम ये कमांड चलाएंगे. Provide password for Apex listener and Apex REST public user from your choice. पासवर्ड देंगे Apex listener और Apex REST public user को अपनी मर्जी से. Now exit this command prompt. इस command prompt को बंद कर दें. Open new command prompt with administrator rights. नया command prompt खोलेंगे administrator के rights से. वहाँ जाएंगे जहाँ ORDS का फोल्डर मौजूद है and reach where ORDS folder is available. And when we reach there, run this command. जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर ये कमांड चलाएंगे. Now we will enter. Enter. If your port is 1521, then hit enter. If your port is different, then define your port and hit enter button. अगर आपकी पोर्ट 1521 है तो आप एंटर का बटन दबा दें. अगर आपकी पोर्ट मुख्तलिफ है तो आप अपनी पोर्ट लिखें और फिर एंटर का बटन दबाएं. एंटर. नाउ डिफाइन प्लगेबल डेटाबेस नेम. प्लगेबल डेटाबेस का नाम देंगे. एंटर. प्रोवाइड पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड फॉर ORDS पब्लिक यूजर. पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देंगे ORDS पब्लिक यूजर को. टू फाइंड योर पोर्ट, कम टू Oracle ORDS DB 12 home 1 expanded. पोर्ट पता करने के लिए Oracle ORDS DB 12 home 1 में आए, इसको फैलाएं, इसको खोलें.
come to net manager, open it, net manager पे आए, उसको खोल लें. Administrator username will be sys, administrator username sys रहेगा. पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देना अपनी मर्जी से. प्रोवाइड पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड. एंटर 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 एंटर. प्रोवाइड पासवर्ड एंड कंफर्म. Enter. Now we will provide a path to Apex static resource location till images folder. अब हम Apex static resource location को बता देंगे images के folder तक का. आ जाएगा तो हम Oracle Apex 21.2 को इस्तेमाल कर सकते हैं. Do not close this command prompt because if it close for any reason, we cannot access Oracle Apex 21.2. However, we can reopen it as well. And reach where ORDS folder is. And when we reach there, run this command. जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर ये कमांड चलाएंगे.